So, very good afternoon to all, and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible and screen is visible. Just type yes on the chat box. Thank you for the confirmation. So, today is the last week of this financial year, that is 30th December. So just type yes on the chat box if my voice is audible, as I can see that some of us are saying that voice is not audible. Just type yes if voice is audible and screen is visible to you all. So those who are attending this session from our WebEx channel, you can see there is a chat section. It will be there, and you can just click on that icon and just type yes if my voice is audible. And those who are attending from this YouTube channel, there is a live chat box will be there. You can just go there and type yes, my voice is audible to you all. So thank you so much for the confirmation. So let's begin this session. My name is Rohit, and I'll be your co-host for this session. And I'm having with me Mr. Karan Pai, who will be walking you through on the Nifty 50 expiry, with the market outlook and index expiry strategies. So now let's see how the market is performing, because this is the last, like the last week of this financial year. Currently, the Nifty 50 is trading around this 23,890, which is around 0.33% up, and Nifty Bank is around 1.11% up right now. So I'm having with me Mr. Karan Pai, who will going to give you the in detailed analysis on the Nifty 50, followed by the Bank Nifty, that how the charts are performing, what is the support and resistance level, and how we can see the breakout in this. So ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं. Additionally, we are going to teach you on the real time, that is on the website में कैसे orders डालते हैं, because there was like many other queries in the past कि कैसे futures और options में trade करते हैं. So we'll be also taking the trade today, but those are not recommended. That this is for just for the educational purpose only. So we're going to showcase you that how the futures and options work. So Karan, all over to you now. Thank you, Rohit. So सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. एंड ये प्रॉबली हमारे इस साल का आखिरी वेबिनार होगा, बिकॉज टुडे इज लाइक द सेकंड लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ 2024. सो सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड आई होप कि 2025 आपके लिए 2024 से बेटर हो. एंड when you are doing your trading, you are much more informed. You come with a lot more knowledge. You come with better analytical skills. So coming on to the Nifty, so जो ये आखिरी 2 हफ्ता होता है पर्टिकुलर ईयर का, so it could be जो गया वीक है वो एंड जो करंट वीक है, इनवेरिएबली ये जो एक टाइम स्पैन होता है जहाँ पर FIIs दे गो ऑन अ हॉलीडे. सो कंसिडर सब लोग पुल आउट करके जाते हैं अराउंड क्रिसमस, एंड देन दे रिटर्न 1 डे आफ्टर द न्यू ईयर. सो तकरीबन सेकेंड तक हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी मार्केट में, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैड पॉइंटेड आउट ऑन फ्राइडे एज वेल. सो अगर आप कैंडल्स देखोगे, विक्स ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा है, बट जो रियल बॉडी है वो काफ़ी छोटी है. मतलब इसका ये मीनिंग है कि बुल्स एंड बेयर्स जो है दोनों मार्केट में ट्राई करते हैं, दोनों मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ देम स्क्वायर ऑफ द पोजीशन एंड देन जस्ट कॉल इट अ डे. कि पोजीशन जो है वो कैरी नहीं करते, बिकॉज दोनों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा. सो अगर आप 20th के बाद का जितना भी आप कैंडल्स देखोगे, सब में ये सिनारियो है. विक्स बहुत बड़े बड़े हैं, रियल बॉडी जो है वो छोटी है. मतलब इंट्राडे में मूवमेंट रहा है, एंड फाइनली 3:30 के आसपास जैसे ही हम लोग का ट्रेडिंग आवर्स गेट क्लोजर टू 3:30, सभी लोग अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, एंड देन दे डू नॉट कैरी एनी पोजीशन.
आज के दिन में अगर आप देखोगे, ओपनिंग जो है वो काफी फ्लैट है या स्लाइटली लोअर है, बट वो बहुत बहुत ही ज्यादा मार्जिनल है। सो उसे हम लोग एक गैप डाउन ओपन ऐसे हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, बट काफी एक मार्जिनल गैप डाउन ओपन है या बहुत ही ज्यादा छोटा गैप है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे इनिशियल आई थिंक अप टू एटलीस्ट 12, सॉरी नॉट 12 o'clock, 11 o'clock, 10:30, 11 o'clock तक द मार्केट वाज गोइंग डाउन। एंड वहां से इंडेक्स ने एक थोड़ा पुल बैक लिया। सो डाउन अगर आप देखोगे कितना डाउन गया था, सो इफ यू जस्ट चेक द लो, इट इज 23,709.1। एंड अभी जो है इंडेक्स तकरीबन 23,885 के आसपास चल रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 190 पॉइंट्स फ्रॉम द लोज of the day. That is how higher we are trading at this point of time. ओ ब्रॉडली जैसे रोहित ने हम पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी यू हैव टू बी रियली केयरफुल। सो निफ्टी की स्ट्रैटेजी का रिपोर्ट आपको आ जाएगा, एंड वो अगर आप फॉलो करोगे तो बेटर होगा। एंड वन थिंग लुकिंग एट व्हाट द पास्ट, जो पिछले 4 दिनों में, पिछले 5 दिनों में हुआ है, पोजीशंस कैरी नहीं हो रहे, and that's a very common scenario. So at least till the second, we expect market to be a bit on the lower volatility side। इंट्राडे में आपको दिखेगी, बट क्लोज टू क्लोज अगर आप देखोगे ज्यादा चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बट टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो फ्राइडे के वेबिनार में भी मैंने ये बोला था कि 24,000 से लेके 24,150 जो है वो थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा फॉर द इंडेक्स। रीजन, देयर इज अ गैप देयर, एंड 24,000 जो है इट्स अ राउंड फिगर। राउंड फिगर जब भी आता है, सो मार्केट अराउंड दैट लेवल टेक्स दोज लेवल सीरियसली, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल जैसे आते हैं 24,000, 24,500, 25,000, 25,500, ये लेवल्स जो है वहां पर मार्केट थोड़ा केयरफुल हो जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आए, हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट आए। इन दिस केस इट इज अ रेजिस्टेंस। सो दैट ऑन द अपसाइड विल बी अ की लेवल टू वॉच फॉर। एंड वहीं पे अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो 23,500, 23,600 के आसपास जो है मुझे मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाई वुड आई कंसिडर दिस एज अ मेजर सपोर्ट? बिकॉज रिसेंट जो स्विंग लो था दैट वाज ऑन द 20th of December, अराउंड वही लेवल पे आया था। सो जो प्रीवियस स्विंग लो है वहां पर भी जो अंडरलाइंग है, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, वहां पे देर इज अ टेंडेंसी फॉर द मार्केट टू टेक सपोर्ट। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो इफ what we have seen historically was to continue, कि the last week of the previous year and the first 2 days of the current year ज़्यादा volatility नहीं होती है, if that was to continue, then the broader range that I see for the index is between 24,150 and 23,550। अभी ये रेंज हो सकता है कि बहुत बड़ा लगे, इंट्राडे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रॉडली ये रेंज के बीच में रहेगा। इट कुड बी शॉर्टर, but unless and until something massive explodes, जब मैं बोलूँ कि there is some sort of geopolitical development या there is some sort of stimulus package announced by one of the economies, you might not see massive movements in the index. That is what I'm trying to convey. Now that we have that out of the way, we'll quickly go to the NSE website and see what the OI data is telling us. And OI, आपको पता ही होगा कि by the time अभी तक I am assuming कि आपको पता होगा कि OI जो है वो कैसा देखते हैं। So we go to the NSE website, type in Nifty, just go on to the option chain, and there we go. So 2nd Jan तक की अगर मैं बात करूँ तो just see the volatility the OI concentration। normally आपने देखा है कि OTMs के आसपास, ITMs के आसपास जो है तकरीबन 5 लाख 6 लाख ऐसा सब OI खड़ा होता है, बट इफ यू लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट राइट नाउ वो काफ़ी कम है। एंड दिस इज निफ्टी 50। सो ब्रॉडली मार्केट भी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड इफ यू ऑल्सो टेक अ लुक ऑन द पुट साइड, 23,800 के आसपास मुझे थोड़ा वाई कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दैट लेवल नाउ। सो आई माइट लुक अ बिट डीपर। सो 23,700 के आसपास जो है वाई कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन द पुट्स, एंड 23,500 के पास तो बहुत ज़्यादा है। So 23,500 was also the level that we saw on the charts. So these are the levels on the downside, and अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो somewhere around 24,100 के आसपास जो है वहां पर थोड़ा OI accumulation भी है, highest open interest भी है। So broadly 24,100, 23,500 is what the market is also expecting at this point of time. Now coming on to Bank Nifty,
बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी इज स्लाइटली इज दैट बिट ऑन द हायर साइड, बट अगेन जो फैक्ट हम लोगों ने निफ्टी में देखा था कि इंट्राडे में आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी एंड देन द क्लोज इज समथिंग एल्स, मतलब आपका या तो फिर इट्स अ स्मॉल बॉडी कैंडल, या इफ यू कंपेयर हिस्टोरिकली फॉर एग्जांपल दिस आई वुड कंसिडर ऑफ ऑल द फोर, आज का मैं कंसिडर नहीं करूंगा बिकॉज अभी तक क्लोज हुआ नहीं है. So of these four अगर आप देखोगे तो this and these candles they are slightly bigger, but if you compare those candles to the previous candles that we have had, करेक्ट, उसके सामने अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी जो है वो काफी श्रिंक हुई है, एंड फॉर गुड रीजंस. अगेन इट्स अ हॉलीडे सीजन, उन लोग का ड्राइविंग सीजन है, सो दे गो ऑन हॉलीडेज. नाउ फॉर बैंक निफ्टी लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो गैप हम लोग को निफ्टी में भी दिखा था, बैंक निफ्टी में वो फिल हो चुका है. So in the sessions to come, the next horizontal level that I would be looking for would be around 52,200 to 52,500. So this is the broader expectation on the upside. And अगर नीचे की मैं बात करूं तो पिछले 4-5 दिनों में somewhere around 50,900 I am willing to round it off to 51,000. 51,000 के आसपास जो है सपोर्ट आते हुए दिख सकता है. एंड मैक्स अगर आप देखोगे, मैक्स में नहीं बोलूंगा बट टेक्निकली अगर आप देखोगे जहां पर मल्टीपल टच पॉइंट लेवल्स वगैरह है, दैट इज अराउंड 50,800. सो वील ऑल्सो टेक अ लुक एट व्हाट द बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट इज टेलिंग अस. Just go on to option chain, and if you see now, of course this is a 29 Jan expiry because हम लोग अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स ही देखेंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखो, आपको यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि यू आर लुकिंग एट द प्रोबेबल मूव्स इन 1 मंथ. सो जो ओआई एक्यूमुलेशन है या जो ओआई के बेसिस पे हम लोग जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस निकालेंगे, दैट द मार्केट इज लुकिंग एट फॉर फ्रॉम अ मंथली पॉइंट ऑफ व्यू. सो जैसे निफ्टी में हम लोगों ने ये हफ्ते के लिए देखा, दैट इज व्हाई द लेवल्स वर अ बिट मोर रियलिस्टिक, बट यहाँ पर हो सकता है कि द लेवल्स आर अ बिट फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. So 53,000 on the downside, again something sorry, 53,000 on the upside. 53,000 say 53,000, I would say 500 on the upside. एंड वहीं पे अगर नीचे की तरफ हम लोग देखें तो 51,500 पर थोड़ा एक्यूमुलेशन है, फॉलोड बाय 51,000. सो अगेन जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी मैच हो रहा है क्लोजली विथ व्हाट वी सॉ ऑन द चार्ट्स. Resistance, we'll quickly revisit what was the resistance we were looking at. We were looking at 52,500, followed 52,500 se leke, somewhere around 52,700 is what we were looking at. But apparently on the upside, the general consensus would be somewhere around 53,000 is what I'm expecting right now. 53,000 to 53,500. Support surprisingly matched, so that is a good thing. So from a broader point of view, even the market is looking at a support level of probably 51,000. So with that out of the way, this is one of our internal software. So उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि how are the sectors looking at this point of time. Now कुछ समय पहले ही मैंने अपना mid market बनाया, and the story was a bit different. So that, around that time there were 9 gaining sectors and 3 losing sectors. But now अगर आप देखोगे 8 sectors are still in the gaining. Private banks have taken a lead and तकरीबन 1.4% ऊपर है, followed by Bank Nifty Financial Services. Okay, lenders in general seem to be in the positive territory. And उसके सामने अगर आप देखोगे, you have something like media or something like auto that are taking a beating. So these are the sectors that have been performing. Now again we get the data with a 15-minute delay, so take that into consideration. अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो ब्रेथ जो है पहले थोड़ा बैलेंस था, मतलब 25 स्टॉक बढ़ रहे थे, 25 स्टॉक गिर रहे थे, बट सरप्राइजिंगली नाउ, आई मीन इट्स नॉट सरप्राइजिंगली बिकॉज हम लोगों ने इंडेक्स का मूवमेंट देखा, एंड इन टैंडम विद दैट अगर आप देखोगे तो टोटल 30 stocks at this point are advancing, and उसके सामने there is 1 unchanged and 19 declining. Of the 30 stocks अगर आप देखोगे, something like Adani Enterprises, Shriram Finance, IndusInd Bank, again other than Adani Enterprises, जितने भी financial services के stocks हैं, जितने भी lenders हैं, pharma है, they seem to be gaining traction today. So जैसे ही हम लोग lenders जब मैं बोलूँ, it is banks, financial services, private banks, PSU banks, all those put together. So उसे एक ऐसे lender basket बोल सकते हैं. And उसके बाद अगर आप देखोगे something like Divi's Labs, Cipla, they seem to be gaining traction too.
एंड वहीं पर अगर लूजर्स में आप देखोगे, टॉप लूजर्स में अगर आपको देखना है, देन यू हैव द आईटी स्टॉक्स विच सीम टू बी गेटिंग बीटन डाउन. सो विप्रो एंड एलटीएम, दे आर टॉपिंग द लूजर लिस्ट. लूजर एज इन द परसेंटेज चेंज वाइज, जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा गिरे हैं, या जिसमें सबसे ज़्यादा एक पुल आया है, उसमें द आईटी पैक seems to be the two from the IT pack seems to be taking a bit of beating, and other than that you have Dr. Reddy, Grasim, Hero Motocorp that seem to be also under a lot of pressure. So, from the market view point of view, this is what I had to discuss, and we'll open up the floor for Q&A, and we'll be available for another 2 minutes for taking the Q&A, and then we'll hand over the session to Rohit for explaining the practical trading part of it. Now, one thing एक आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपको ट्रेड डालना, जो भी आपको रोहित सिखाएंगे, that is all hypothetical and not a recommendation. That is something that you have to keep in mind. अगर recommendations आपको follow करने हैं, हमारे research technical research जो है intraday calls post करते हैं, and then we also have a few, अगर आप app use कर रहे हो तो app notification में भी आपने देखे होंगे the new year, yeah, all those things are kind of coming up. So you can definitely take a look at that. एंड अदर दैन दैट, अगर अर्ली मॉर्निंग्स में आपको मार्केट के बारे में जानना है, देन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वी ऑल्सो हैव द पॉडकास्ट that is recorded by our HOR, Head of Research, Mr. Akshay Chinchalkar, and that will give you a very brief insight about what is happening in the economy, in the financial markets from a global point of view, multi-asset point of view. So I'll stop talking here. We'll open up the floor for 2 minutes. And if you don't have any queries, my request would be not to look for stock specific recommendations or anything of that sort. Index पर अगर आपको कुछ पूछना है, we'll be more than happy to help you. So if you have any queries, anything, then you can directly put in the chat box, and Mr. Karan is here like to answer all your queries related to the this week weekly expiry on the Nifty 50, and what kind of the strategy we can take it. Okay. So we are having one query, that is what can be the RSI level for this week? Like means if we are doing the intraday, then what position we can carry for it? Okay, so from an RSI point of view, अगर मैं देखूँ तो I have one observation, which is basically a bullish confirmation, but अभी बताना difficult है. The reason being that we are in a low volatility phase. So RSI value अगर आप 21st नवंबर का देखोगे and 28th December का देखोगे, there has been an uptick in the RSI along with the lows. So higher lows बने हैं, at the same time the RSI value has also kind of gone up. सो इसे हम लोग टेक्निकल टर्म्स में वी कॉल इट बुलिश कंफर्मेशन, बट अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आया है बिकॉज द इंडेक्स इज गोइंग थ्रू अ वेरी लो वोलेटिलिटी फेज. सो ऐसे टाइम पर इफ देर इज अ पॉजिटिव ब्रेकआउट एंड योर RSI वैल्यूज ऑल्सो शूट अप लाइक एनीथिंग, देन यू कैन कंफर्म दैट इट्स अ बुलिश कंफर्मेशन. एंड हो सकता है कि एज द इंडेक्स गोज हायर आपको मोमेंटम बिल्डअप काफी दिखाई. So Karan, if you can match with the Nifty 50 and the Bank Nifty both charts, because Bank Nifty is quite up right now, that is almost like 1%. So what is the top sectors which are gaining the Bank Nifty today? Yeah, so just a minute. Okay, just give me a second, guys. So रोहित, अगर आप सेपरेटली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखोगे तो क्लियर कट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन द बैंक निफ्टी सीम्स टू बी आउट परफॉर्मिंग राइट नाउ. सो जो एक गैप बना था यहाँ पे ऑन द 19th of December, बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिल इट अप.
And not only that, you can also see that the कैंडल का साइज अगर आप देखोगे तो परसेंटेज चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे निफ्टी इज जस्ट अप 0.2%, वहीं पर बैंक निफ्टी इज अप अप्रोक्सीमेटली 1%. सो वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ज्यादा है एंड फॉर गुड रीजन. जैसे हम लोगों ने सेक्टर्स हम लोग जब एनालाइज करे थे वी सॉ दैट द लेंडर पैक इन जनरल वाज गोइंग हायर. So that could be it. And another thing, जैसे कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ बिकॉज स्टेटस को हो जाता है. स्टेटस को एज इन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, assuming other things being equal. So वो point of view से अगर आप देखोगे just by looking at the charts, just by looking at the size of the candles, just by looking at the volatility, Bank Nifty at this point seems to be a bit more stronger compared to Nifty. So we are here for another minute. So we'll wait for a 30 seconds before we go to our terminal and look at the Nifty 50 and the Bank Nifty charts, that how it is performing. So if you have any queries, anything, you can put in the chat box. So now let's go for the terminal, that what we want to show you, that how you can place the orders in the futures and in the options. So I'll just present my screen. So I'm sure my screen is visible to you all. Just a minute. Yeah. So today we will walk you through on the Access Direct website. That is जहाँ पे you can see on the this is how the website looks like for the Access Direct, accessdirect.in. Now if you go into the research section, then you can see the research trading ideas. Under the trading ideas, you can find all the trading ideas that our research analysts used to publish it. Now on the top right hand side, sorry, on the left hand side, you can see that there is a order status, trade book, position summary is there, and the right hand side there is a instant options. Then the this instant option is there, and the trade smarter with the new terminal. Okay, so these are the new two terminals that what Axis Direct launched. So I'm going to cover it much more in detail. That is on the next week, but today I'll be going to explain you on the website. So let's go step by step that how one need to take the trades into the futures or into the options, ensuring that this is the educational session. So request you to please don't follow on the tips, request you to you have to do your own research, or you can follow the research ideas. Okay, so I'll just showcase you that how you can place the orders into the futures and the options. Now let's say looking at the candles right now, the bank nifty or the nifty 50, if I take a have a look actually. So nifty 50 is right now, it is showing the selling pressure, but it is around this 23,854. And just a minute.
So I've already showcased you that how the Nifty 50 was performing, and जहाँ पे Nifty 50 में profit हो रहा था, that was around this 2000 rupees का profit हो रहा था, and कैसे Nifty 50 perform करता. So we have entered that was in 23,800 put options. We have bought it, and market नीचे से काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था उस समय, and 800 पे we have bought the put option, and 760 तक गया था. So we have seen the profit of around this rupees 2000, and now it is just bouncing back. So I'll hold up my position, and in this means during this next webinar we're going to showcase you that okay, how the profit booking has been done and how the risk management have I have followed here. So request you to stay tuned, and on the next webinar we're going to catch up on the other two terminals what Access Direct has introduced it. So we're going to walk you through on that other two terminals also. So अभी हम लोग निफ्टी 50 देख सकते हैं कि जैसे एक वापस से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, and the candle is around like forming, that is can be the sideways also, but the demo what we have shown you on the Access Direct terminal, that is for the education purpose only, that how you have to place the orders into the Nifty 50 futures and the Nifty 50 options. So with this, we'd like to end the session here, and we'll meet you on this Thursday and showcase you about the Nifty 50 expiry analysis. So thank you so much, Karan, and thank you to all the audience for attending this session. We'll see you this next. We'll see you this Thursday at 12 p.m. Thank you so Thank you much. for joining us, guys.